Hello everyone, good afternoon. Welcome to the afternoon trading session on Stockholm Asian Paints on 15 minutes time frame. Bilkul Narayan ji, we will definitely take up your stock. Good afternoon, Arpit sir. I hope you can hear me clearly. Very good afternoon, Anuj. Just give me a minute. I'm just setting up the frame. Sure, sir. So guys, we had a great session on this Friday with Arpit sir in option strategies. We got to learn a lot. जिन लोगों ने attend किया था, they can definitely share their experience. And this Friday again at 4 p.m. दोबारा Arpit sir से हमने time लिया है for another session on option strategy. This will be the part 2 जहाँ पे हम कुछ advanced strategies cover करेंगे. So feel free to join in, ask your queries and learn from the best and understand how do an research expert makes a decision कि कौन से ट्रेड्स लेने हैं कौन से नहीं लेने, हाउ टू डिसाइड द स्ट्राइक. जब आप पूछते हैं ना सर ये ट्रेड किस बेसिस पे दिया, ये स्ट्राइक क्यों चुनी, सो जॉइन द सेशंस एंड यू विल गेट टू नो अ लॉट. And coming back to the afternoon session, we'll start the market outlook. Options, we'll see if we can have an option trade क्योंकि the Sensex है. Hoping sir you give us a good trade and you can share your questions in the chat. We'll be happy to take them up one by one. अगर question answer नहीं हो पाए so feel free to drop them on Stockholm. We'll be happy to revert there. So Arpit sir, handing it over to you. You can start the session. We can see your screen. We can see you. We can. Very good afternoon, guys. Welcome to Monday expiry play. Initially used to have, but now there is no expiry play. But there is a change. Tomorrow we have Sensex expiry play. Last week onwards, it has been changed as per the circular. So definitely, first and foremost, starting with the flow for the session would be the index outlook, Nifty, Sensex, Bank Nifty, followed by the broader market outlook. Which ideas are looking good positionally? CDI calls, few BTST or STB as per the market setup, and then if we can get opportunity for Sensex calls as per the market setup wise to play the expiry swing or expiry move or any strategy. As last week we have an expiry strategy session and this week also we have. So if we can make something from it and try to play it out. So starting with Nifty today started on a flattish note. Initially it dipped towards 23 150 23 180 levels, and then again strong rebound was seen from the lower levels. So if you see over the setup wise in Nifty का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें, पहले 5 दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है. नीचे 23,000 का सपोर्ट है, ऊपर में 23,400 450 का हर्डल है. वीकली स्केल पर अभी भी देखें तो लोअर हाइज बना रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि अपर बैंड पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है. बट इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप मार्केट का टेक्सचर अगर आप देखें, सो एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव, एक दिन पॉजिटिव, और यही मार्केट का पिछले कुछ दिनों से स्ट्रक्चर रहा है. बिगर ट्रेंड अभी भी एक बार पेन में है, अपसाइड कैप है. 23,450 23,500 एक मेजर सप्लाई जोन है. बट एट द सेम टाइम पे अगर हम देखें तो रिलेटिवली ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हुआ है और नीचे भी सपोर्ट इंटैक्ट है. सो नाउ जो पहले हमारा 1-2 हफ्ते पहले जो स्टैंड था कि एकदम हमें वन साइड वीकनेस ही लग रही है, अब स्टैंड वाइज में एक बार थोड़ा ओवरऑल एक रेंज बाउंड टू नेगेटिव बाइस है विद एन अपसाइड एंड डाउनसाइड लेवल्स पे सपोर्ट है नीचे की तरफ और अपर बैंड में थोड़ा सा पॉज है. सो निफ्टी लेवल्स के बारे में हम बात करें आज के लिए 23,250 इंट्राडे सपोर्ट है, ऊपर में 23,400 हर्डल है. ऑल्सो वन मोर थिंग वी लाइक टू मेंशन, टेक वन डे एट अ टाइम, बिकॉज अगर हम ओवरऑल मार्केट का भी सेटअप देखें, yesterday on Friday Nifty was falling, Bank Nifty was in deep losses. Today there is exact reverse picture. So ये मार्केट का सेटअप हो गया mainly because of the earning season, global factors and lot of volatility within the Indian equity markets. So Nifty के बारे में बात करें, इमीडिएट बेसिस पे 23,250 सपोर्ट है इंट्राडे में, ऊपर में 23,400 23,450 हर्डल जोन है. पोजिशनली जब तक 23,500 नहीं निकलता है तब तक निफ्टी में वन साइड मेजर तेजी नहीं है, नीचे में लेकिन सपोर्ट इंटैक्ट है 23,200 23,000. सो निफ्टी पे व्यू जो है मिक्स है, 23,250 से लेके 23,400 इंट्राडे रेंज है. पोजिशनली 23,100 100 का सपोर्ट है, ऊपर में 23,500 का हर्डल है. Now, if you talk about Bank Nifty, so Bank Nifty, the story is little bit different. Friday, it was trading in deep losses. Today, it opened gap up mainly because of the outcome of the Kotak Bank strong results, quarter results. And post that, we have seen a good follow buying in the major part of the session. So Bank Nifty 150-200 point positive खुला, 200-250 point, and slowly steadily from 48,700 to 48,900, 49,200, 49,500, slowly steadily Bank Nifty is moving higher. So अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, पिछले 5 से 6 दिनों से एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है. 49,500 एक मेजर लेवल है. 49,500 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हमें 50,000 तक का मूव दिख सकता है. बट एट द सेम टाइम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा है बैंकिंग स्पेस में.
सो इंस्टेड ऑफ इंडेक्स देखिए स्टॉक स्पेसिफिक वाइज एक्शन तो काफी अच्छा है, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो बजाज ट्विंस हो. सो विल टॉक अबाउट दैट आल्सो. सो बैंक निफ्टी व्यू इज मिक्स with immediate support at 49,000, upper band hurdle है 49,750, 50,000. इंडेक्स में हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में व्यू एक मिक्स है. टेक वन डे एट अ टाइम and play that swing on the positive side or the negative side. Now coming on to the overall broader market perspective, if we see broader market wise, mid cap small cap में हमने थोड़ा सा एक्शन देखा है. नीचे सुबह फ्लैट खुला था एंड स्लोली स्टडीली भी हमने नीचे की तरफ से रिकवरी देखी मिड कैप इंडाइसेस स्मॉल कैप में. If we talk about stock ideas, so since morning we were quite bullish on the Bajaj Twins because our financial space काफी अच्छा है. उसमें भी हम अगर देखें तो बजाज फाइनेंस ऑलरेडी हमारे कॉल ओपन है. एक नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया 4 वीक प्रोडक्ट जिसमें हमारा बजाज फाइनेंस कॉल ओपन है. Apart from that, Bajaj FinServ. So one of the BTST ideas that are looking very promising is Bajaj FinServ. I'll repeat. So अगर आप चार्ट वाइज देखिए तो पिछले 12 से 13 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट निकाल रहा है. डेली स्केल पे पोलर फ्लैग का ब्रेकआउट दे रहा है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, रेंज ब्रेकआउट विद गुड बुलिश कैंडल. 1730 के अराउंड अभी चल रहा है. सो आप लोग 1725 से 1735 की रेंज में बाय करें. 1695 का स्टॉप लॉस आप रखें. हमें मूव दिख सकता है 1760 1780 तक का. So first BTST idea, Anuj, I will mention the levels. Bajaj FinServ 1725 से 1735 की रेंज में बाय करें. 1690 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 1780 के टारगेट के लिए. I hope the levels are clear. Yes, sir. ठीक है. Now moving on to the overall market price, if you see result season के वजह से हमें काफी बड़े swings भी दिख रहे हैं. Along with that, if we see one more idea that is looking good from the positional perspective is, and we have been quite bullish, that is a CDI call, that is Bharti. So Bharti का अगर हम चार्ट सेटअप वाइज देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग है. रिलेटिवली पूरे मार्केट की वीकनेस के बाद भी वीकली स्केल पे कंसोलिडेट कर रहा था. आज उसने रेंज ब्रेकआउट दिया है 1625 1630 के ऊपर. सो पोजिशनली हमें लग रहा है स्लोली स्टडीली ये हमें वापस 1700 1720 तक का मूव दिख सकता है. So one of our CDI calls, conviction delivery ideas from couple of days to a week time is Bharti. 1635 से 1640 की रेंज में बाय करें. 1595 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 1720 के टारगेट के लिए. सो दिस इज वन अ सीडीआई कॉल. बीटीएसटी आइडिया हमने ऑलरेडी एक शेयर किया बजाज फिनसर्व. और एज पर द मार्केट सेटअप वाइज जैसे कोई हमें नए आइडियाज लगेंगे तो हम उसके बारे में भी अपडेट करेंगे. कमिंग बैक टू द ओवरऑल मार्केट पर्सपेक्टिव, निफ्टी रिलेटिवली आज थोड़ा स्लोली स्टडीली चला है. कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी तो रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया है बिकॉज आज आईटी जो स्टॉक्स है, आईटी स्टॉक्स में थोड़ा सा मिक्स सेटअप है. सिलेक्टिव स्टॉक्स में वीकनेस है. एचयूएल रिलायंस थोड़ा डल है, बट एट द सेम टाइम बैंकिंग इज आउट परफॉर्मिंग. एंड हमने हिस्टोरिकली भी देखा जब भी बैंकिंग ज्यादा चलता है रिलेटिवली आईटी थोड़ा सा सबड्यू रहता है. सो कमिंग ऑन टू द लेवल वाइज हमने ऑलरेडी मेंशन किया 23,400 निफ्टी में एक मेजर लेवल है. एनी क्लोजिंग अबाउट 23,400 ही बायस मेजर चेंज होगा निफ्टी के लिए. बैंक निफ्टी में 49,500 is a major level. Talking about bank nifty also, if we see within that banking space में stock space action काफी अच्छा है. And historically we have seen whenever we see result season start picking up, उसके पहले stocks में काफी अच्छा momentum रहता है. तो उसमें PSU पैक में से SBI है, but before that we have come up with one more BTST trade as marketing flavor and try to make the most of it from the pharma space, that is PPL Pharma. So PPL Pharma का अगर हम चार्ट सेटअप देखें तो डेली स्केल पे रेंज ब्रेकआउट दिया है अबाउट 238 240 लेवल्स के अराउंड. स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल. सो PPL Pharma इज अ BTST ट्रेड. अभी 242 चल रहा है. आप इस लेवल पे बाय कर सकते हैं 240 तक का. 234 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 255 के टारगेट के लिए. So two BTST ideas we have shared. One is Bajaj FinServ and second is PPL Pharma. 240 से 242 के रेंज में बाय करें. 234 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 255 के टारगेट के लिए. So two BTST ideas we have shared. We have discussed about the Nifty, Bank Nifty outlook. One CDI call that is Bharti Airtel is looking good from couple of days to weeks time. Apart from that, Sensex expiry is there tomorrow. But if we see one more thing I like to add over here is India VIX. In next couple of days we have budget after 10 days and definitely India VIX. The greed and fear indicator is trading between 14 to 16 levels. So overall setup wise अगर हम देखें तो India VIX जो है थोड़ा सा बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है. हालांकि अगर आप देखेंगे मेनली बिकॉज अहेड ऑफ बजट वी जनरली सी स्पाइक इन वोलेटिलिटी स्पेशली इन जनवरी सीरीज. सो इंडिया विक्स थोड़ा सा स्पाइक हो रहा है जिसकी वजह से रोलर कोस्टर राइड रह गए विद इन द रेंज.
निफ्टी की रेंज है 23,200 से लेके ऊपर 23,450. बैंक निफ्टी की इमीडिएट रेंज है 49,200 से लेके 49,750. And the next couple of days also will be roller coaster only because of budget and stock specific action काफी चल रहा है because of the earning season, and likewise you have to play that swing. Now coming to the overall market view wise, very selective stocks में momentum है, sectors wise play out हो रहे हैं, but there is not a structural rally that is happening out. Very few sectors में है जिसमें structural momentum है, so we are only focusing on that stocks. Apart from that, जो भी mainly trading bets है या जो short term movement है, try to play out that. For example, today there was good momentum in defense stocks, but it's not necessarily tomorrow that again the same momentum will be there or no. So it's very, you have to be very much dynamic, very sharp in trading, especially in such choppy markets, and play it accordingly. So what we can do, Anuj, we can take a couple of stock queries in between. As we get more opportunities on the stock front or on the index front, we'll update on it. In the meantime, we can take a couple of stock queries and then we can accordingly play it out. So the first query we have is view on Electra. Electra. Let me have a look at the chart. Electra green check. So if I see after a huge up move in last week on 14th of Jan, post that it is consolidating, forming a kind of a volatility compression pattern on daily scale. Let me have a look at the weekly chart. On the weekly chart, the stock is still in downtrend. I think a closing above 1420, 1430 would change the setup of the stock. So setup positive होगा 1430 के ऊपर ही, 1430 के ऊपर ही fresh entry आप करें अगर तेजी प्ले करना है 1460, 1480 के लिए. Immediate basis पे 1380 एक important support है. Fresh momentum above 1430 levels. Sir, Asian Paints on 15 minutes time frame. You view for today. Okay. That's a quite smaller time frame analysis, but yeah, still if we see for the Asian Paints chart wise, first I will look at the daily chart because that is very much important to understand the smaller trend perspective. If I see the bigger trend of the stock still is in pain, however नीचे के levels थोड़ी सी हमने buying interest देखा है. So now let me pull up the smaller time frame chart. Yeah, so for smaller time frame chart, if I see a good move from 2020 to 860 to 20 to 85 levels. Now after consolidation breakout, I think it is given on the range breakout above 20 to 75, 20 to 80. I think 20 to 65 would be a support. Upper one में 23.5 to 305. I'm talking about the smaller levels because हमारा time frame भी बहुत छोटा है. So 2305, 2310 तक का move देख सकता है Asian Paints में. ध्यान रखिए bigger trend of the stock is still in pain और इंट्राडे क्लियर किया है तो आप 2260 का एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 2260 का 2260 अपर बार में 2305 2310 तक का मूव दिख सकता है. Sir, you view on R Power. Yeah. Reliance Power. As you see in last couple of weeks, if you see over the bigger trend of the market has been pain. So a lot of stocks have already corrected decently from high levels, all now average of 15 to 20%. Some stocks have corrected more than 25, 30% also. So if I see the chart of R Power on the weekly scale, broadly it is trading in a range between 38 to 45 levels. Immediate basis पे lower highs को negate नहीं किया अभी भी. So immediate basis पे 42 एक resistance zone है. Fresh closing above 42 can head the stock towards 45 levels. तब तक एक रेंज में रहेगा. बहुत खराब सेटअप भी नहीं है तो बहुत ग्रेट सेटअप नहीं है. एक रेंज बाउंड काउंटर रहेगा with major support at 37 levels. So CG Power bought at 781. CG Power bought at 781. I think last week it has given a breakdown, but then because of good recovery in the market, we have again seen good recovery. 781. Okay, so that's quite a buying price at higher levels. Post that we have seen a decent correction in the stock towards 600 levels. Now अगर हम देखें setup wise, जो एक major resistance zone, जो support zone हुआ करता था around 700 तक का, daily scale पे lower highs को negate किया, strong bullish candle बनाया है. अपर बैंड में 700 एंड देन 720 एक हर्डल जोन है.
So we'd advise कि आपने जो ऊपर वाली position ली है, better to exit in the stock in some losses near 720 levels and then wait for fresh entry, because generally such counters pullback में fast up move भी आते हैं, but generally they don't sustain. So better would be to exit the stock near 720 levels and then look for fresh entry if the market setup is favorable and the stock setup is favorable. Coming back to the Nifty setup, if I see the setup wise on the 50-minute chart also, एक range में ही trade कर रहा है. Why I'm seeing Nifty? Because through that I'll get opportunity in Sensex trade also. So Sensex भी एक range में ही trade कर रहा है. As such, there is no major thrust. But if we get any opportunity for the stock option, for the index options or any strategy, we'll update on it. Also guys, one more thing I like to mention, overnight अगर आप देखें तो काफी scenarios change हो रहे हैं market में, stocks में, mainly because of the earnings impact. So आप जो भी positions carry कर रहे हैं, अगर उसका result है, so please आप उसको positions को hedge रखिए अगर आप leverage ले रहे हैं. So that would be advice from our side, because अगर favorable आया, that's very much welcome move. But if it is unfavorable, then you have to be protected and we have to be hedged against our unforeseen circumstances. So that is very important. चाहे कोई भी stock ले रहे, please keep a note of that result date for that stock, because we can get massive swings on the positive side or on the negative side. Yeah, as we were discussing about some trading opportunities, so we have come up with a stock option that is Bajaj Finance, Bajaj Finserv. My bad. So if I say already we talk about Bajaj Finserv as a BTST idea also. So Bajaj Finserv अगर हम chart खोले, so काफी strong pole and flag का breakout दिया है. So 1740 का call की हमारी बाई की सलाह है, अभी चल रहा है around 31-32 के अराउंड. सो बजाज फिनसर्व 1740 को वाला बाय करे 31-32 की रेंज में, 26 रुपए का एसएल रख के ऊपर 42 के टारगेट के लिए. सो बजाज फिनसर्व इज अ स्टॉक ऑप्शन कॉल, 1740 का कॉल बाय करे 31 से 32 की रेंज में, 26 रुपए का स्टॉप. सर SW सोलर, SW सोलर should be buy or wait for the right time? Can you just spell it? SW, right? Yeah, SW SOLAR. Okay. Let me have a look at the bigger time frame chart. I think this chart is relatively of a short history, but I'll still check the chart. So if we see the chart setup wise, clearly in downtrend, forming lower as low lows on the weekly and daily scale. Immediate basis पे hurdle is around 405 410 levels. जब तक 410 के ऊपर सेटअप क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक better to avoid exit the stock on any bounce, because the nature of the stock is clearly downtrend so far. So better to exit on bounce near 405 4110 levels. Better to exit the stock on bounce. Sir, Vijaya quantity 50 at 1203.55. Vijaya Diagnostic, if I'm not wrong. Yes, sir. Okay, what is the buying price? 1203. 1203. Okay, so if we see the chart setup as in the daily scale, good move was seen on start of the January from 1500 1050 to 1250 levels, but daily scale पे वापस low lows बना रहा है, and now it's coming back to its support zone. So one good part is that जो market में भी fall, ये stock में जो fall हुआ है, it is on the back of low volumes. That clearly indicates कि major selling pressure नहीं है, but वापस support zone के पास में आ रहा है. So आपने stock already buy upper band पे किया हुआ है, so we'd advise you buy additional quantity near 10201050 band. 1020 से 1040 की रेंज में आप नया fresh add करें, 990 का stop loss रख के आप उसको average कर सकते हैं, and जैसे थोड़ा pull back आता है, so you can hold that stock. So 990 का एक major support है. Try to average the stock near 1030 1040 levels with stop loss of 990 for an upside move towards 1150, then 1180. So we on SBIN. SBIN, State Bank of India, right? And Yeah. if I was just about to
plot the chart only, because if you see overall the banking space, a very selective buying was seen till the last week, but today we have seen good refresh buying in the banking and the PSU space. So अगर आप PSU stocks का अगर आप chart setup wise देखिए तो relatively SBI has been a preferred pick. पिछले काफी हफ्तों से डाउन ट्रेंड में था, लास्ट वीक थोड़ा सा स्टेबल हुआ एंड हमने नीचे से रिकवरी देखी है. सो आई थिंक फर्स्ट फ्रॉम द सेटअप वाइज ऑन द वीकली स्केल एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है, 740 से लेके ऊपर 850 के रेंज में. इमीडिएट बेसिस पे 765 770 एक हर्डल हुआ करता था जो लोअर हाइस का हाई है, उसको सरपास किया है. स्लोली स्टडीली वी कैन एक्सपेक्ट द मूव टुवर्ड्स 795 800 लेवल वाइज. सो रिस्क रिवॉर्ड वाइज करंट जंक्शन पे एसबीआई better because it is near its support zone and turning from its support zone. Slowly steadily expect move towards 800 805 levels. Stop loss हो जाएगा 765 का SBI. So sir, 2-month view on DAM Capital from the current market price. DAM Capital, let me know. So definitely it's a recently listed stock and the chart history is also very narrow. If I see the setup wise, mainly pure based on the technical wise, the chart history is very narrow. But if we still look at the levels, 350 is the immediate hurdle level. जब तक 350 surpass नहीं करता है, तब तक a view would be overall bias would be negative. So any closing of 350 will change the setup of the stock. But till that time, जब तक उसके नीचे है, तब तक bias would be negative. Coming back to the Nifty and Bank Nifty, so Bank Nifty also I was trying कि अभी हमारे मंथली ऑप्शंस है, बट मंथली ऑप्शन में काफी बार अच्छा मोमेंटम भी मिलता है एंड आज एक अच्छा स्विंग भी था. काफी दिनों के बाद हमने तेजी के स्विंग्स आज पकड़े भी, फ्रॉम रैली टुवर्ड्स फ्रॉम 49,000 टू 49,500. बट पोस्ट दैट अगर पिछले एक सवा घंटा पोस्ट 1 o'clock तक देखे तो लो राइज बना रहा है एंड हम कॉल भी देख रहे थे, बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा स्लो एंड स्टेडीली है. बिकॉज अगर हम मार्केट का पूरा सेटअप वाइज देखें, आजकल मार्केट में एक दो बड़े मूव्स आते हैं एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे इट गोस साइडवेज. ये काफी बार हमने मूवमेंट देखा है पिछले एक्सपायरी डे में भी, नॉन एक्सपायरी डे में भी. बट बायस वाइज बैंक निफ्टी रिलेटिवली बेटर है because HDFC Bank is turning from support zone, SBI is turning, Kotak is relatively strong, ICICI is stable. Apart from Axis and IndusInd, बाकी चारों banks थोड़े stable है. So Bank Nifty wise definitely थोड़े से bias positive है. Also, we have a heavyweight result coming of Bank Nifty that is on day after tomorrow on 22nd. Then we have ICICI result on 25th. So it's a heavy pack week for the banking space especially. So guys, whatever positions you carry overnight, please keep thing in mind कि रिजल्ट आप देखें और उसके हिसाब से आप उसको प्ले आउट करें. लेवल्स हमने ऑलरेडी शेयर किया है. सो जस्ट टू रिकैप कपल ऑफ थिंग्स, बीटीएसटी आइडिया बजाज फिनसर्व हमने दिया है, उसके साथ हमने ऑप्शन कॉल भी बजाज फिनसर्व का दिया है, क्लासिकल पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट ऑन द डेली स्केल. सीडीआई कॉल वी हैव गिवन फॉर भारती एयरटेल एंड वन मोर बीटीएसटी आइडिया वी हैव शेयर इज दैट इज पीपीएल फार्मा. बिकॉज फार्मा स्पेस में सिलेक्टिव स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है एंड स्पेशली ये सब हाई बीटा काउंटर्स कैन गिव गुड मूव्स व्हेन मार्केट इज सपोर्टिव. सो आज मार्केट रिलेटिवली थोड़ा बेटर है, इसके लिए वी आर एग्रेसिव ऑन द नंबर ऑफ ट्रेड्स. सर्टेन टाइम्स देयर आर व्हेन मार्केट इज क्लियरली डाउन ट्रेंड, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ऑन द लॉन्ग साइड काफी कम रहती है. सो अकॉर्डिंगली एज पर द मार्केट सेटअप वाइज वी हैव टू बी वेरी मच फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक टू प्ले द स्विंग्स. So I think in terms of idea wise, quite a lot ideas we have shared. Anuj, if there are any stock queries, couple of them, we can take that also. And Sensex we were tracking, but so far it is dull, so there is no major thrust for the option buying. Better we can play that swing tomorrow itself on the expiry, on the Sensex expiry day itself. And strategy also will avoid, because it's better to take a strategy on the start of the session to play that swing. Sir, CDSL should we buy or not? CDSL, the question arises, if it's from an investment wise, definitely it's a buy. If it's from a trading bet, then it has to be selective. Now chart setup wise if we see, एक अच्छी रैली हमने देखी थी पूरे नवंबर दिसंबर सीरीज में फ्रॉम 1500 टू ऑलमोस्ट 2000. वहां से करेक्टिव मूव हमने देखा है. नाउ आफ्टर अ गुड मूव स्टॉक भी कंसोलिडेट कर रहा है. सो सेटअप वाइज देखें तो 1500 1520 एक मेजर सपोर्ट जोन है जो पहले हर्डल जोन हुआ करता था. अपर बैंड में 1650 1700 है. So investment wise it's a top pick within the exchange and intermediary space. Trading wise में 1620 की क्लोजिंग के ऊपर ही फ्रेश मोमेंटम रहेगा towards 650 680 लेवल्स तक का. तब तक एक बायस पॉजिटिव टू रेंज बाउंड है काउंटर में. Sir, CUB for BTST. CUB
Let me have a look at the chart. So banking space is relatively better, yes. And if you see the structure wise, daily scale, weekly scale, daily scale पे lower rise का structure intact है, strong bullish candle. I think I'll just look at the intraday chart also for better conviction and for the BTST. Hourly chart, if I see the setup wise, yes, slowly steadily is moving higher. So definitely can go for BTST in CUV because banking flavor जो sector है वही flavor में है. So definitely can play it out, but stop loss छोटा ही रखे. 171 that would be enough to play the move towards 177 179 तक का. So 171 का आप stop loss रख सकते हैं to play the swing towards 177 178. जो बजाज फिनसर्व का हमने कॉल दिया था, इट इज कोडिंग नियर इट्स बाइंग प्राइस इटसेल्फ, वो हमारा बीटीएसटी ट्रेड भी है. So certain setups give we have very high conviction, so we definitely try to push that. So वो already open भी है. Apart from that वो BTC trade भी है. Nifty Bank Nifty में there is no major trade as such, so we are refraining to give any particular trade for the option buying. Levels हमने already discuss किए. Anuj, I think we can take if there are more queries, one or two, and then accordingly we can close it out there. Sure, so we'll take two more queries. So view on Nika 170 call bought at 8.7. 190 call 190. 170. 170. Let me have a look. Nika. Nika. Let me have a look. Yeah. 170 call. So I'll open up the chart. 170 right now Nika is trading around 172. So नीचे से एक अच्छा पुलबैक हमने नीचे से रिकवरी देखी from 165 160 levels. Level wise अगर देखें 176 is a major supply zone. So अगर आपने ऑलरेडी बाई किया और बाइंग प्राइस के अराउंड ही चल रहा है तो आप उसको होल्ड करें, बट स्टॉप लॉस आप ध्यान रखिए नाइका में 168 की क्लोजिंग के नीचे अगर आता है, बेटर टू एग्जिट दैट स्टॉक. फ्रेश momentum would be only closing above 176 levels. I'll repeat, नाइका का ट्रेंड जो सेटअप है मेजर बार बार 176 से सप्लाई आता है, तो 176 के ऊपर ही फ्रेश तेजी रहेगी नाइका में. तब तक एक रेंज बाउंड काउंटर है, और अगर आपने जो कॉल होल्ड किया है उसको अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 168 का लेवल आप ध्यान रखिए नाइका में. उसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है, बेटर टू एग्जिट दैट स्टॉक. Sir, your view on RVNL, should we buy or not? RVNL, as you've seen, railway stocks have been quite a pain in last 6 months, but ahead of budget, lot of expectations are there that we can get some pullback move ahead of the budget, and likewise. So chart setup wise, एक base formation around हुआ है around 410 415 levels तक का around, but still कोई major if you see the momentum is not built up. So अगर risk reward wise देखें अभी तक 1:1 ही है, अभी 430 के अराउंड चल रहा है, ऊपर 450 55 हर्डल है, नीचे 400 का सपोर्ट है. सो अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो आप बाय कर सकते हैं 410 के स्टॉप लॉस से, ऊपर 450 460 के लिए. कोई कंजर्वेटिव है तो 450 की क्लोजिंग के ऊपर ही बाय करे. 450 एक बार निकल जाएगा तो एक बड़ा सेटअप जो चेंज हो जाएगा स्टॉक में, तो हमें वो 500 510 तक के मूव देख सकते हैं. तब तक एक रेंज बाउंड मूव है विद इन द एंटायर डिफेंस एंड रेलवे स्टॉक स्पेस. And so this will be the last query for the day. Axis Bank. Axis Bank, one of the huge underperform within the banking space. Post its result, the stock was down by 4.5%. Weekly scale पे low rise, low lows बना रहा है. As of now, there is no major reversal. So as of now, जब तक 1010 1020 जब तक नहीं निकलता है, तब तक स्टॉक एक प्रेशर में ही रहेगा. Also ध्यान रखिए, there would be chances कि आपका इंडाइसिस ऊपर होएगा, but आपका स्टॉक डाउन होगा because of the impact of the earning season. 1020 जब तक नहीं निकलता तब तक bias would be negative for Axis Bank. नीचे support है 970 950. So guys, that will be all for today's afternoon session. We have many sessions lined up this week, and that will be all for today. We hope कि कल हमारी Sensex expiry कुछ exciting सी हो. So that will be all. Thank you everyone. Thank you Arpit sir for joining. See you again this week in the one of the trading sessions and the knowledge session at 4 p.m. on Friday. Thank you everyone. Thank you.